You are watching Travel World Online. The 14th Conventions India Conclave, the flagship event organized by the India Convention Promotion Bureau (ICPB), was inaugurated by Shri Bhupendra Patel, the Honorable Chief Minister of Gujarat. The event aimed at promoting India as a top MICE, meetings, incentives, conferences, and exhibitions destination, commenced in Gandhinagar, Gujarat, at the Mahatma Mandir Convention and Exhibition Centre today, 7th December. This event that will conclude on 9th December is expected to build upon the momentum in the MICE industry, furthered by the impact of G20. The ICPB State Chapter Gujarat was inaugurated during this conclave. On the occasion, Chief Minister Gujarat said, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वैश्विक नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्म और कर्मभूमि में आज के 14th कन्वेंशन इंडियन कॉन्क्लेव में माइस इंडस्ट्रीज से जुड़े देश विदेश से पधारे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का यह इवेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। प्री वाइब्रेंट समिट के रूप में आयोजित 14th कॉन्क्लेव इंडिया कन्वेंशन इंडिया कॉन्क्लेव का यह इवेंट माइस इंडस्ट्रीज यानी सम्मेलन पर्यटन सेक्टर पर बेस्ड है। जब किसी राज्य या देश में बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन होता है तो इसका आर्थिक और सामाजिक लाभ पूरे इकोसिस्टम को मिलता है। वर्तमान में माइस इंडस्ट्रीज की वर्ल्ड वाइड वैल्यू लगभग 800 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। इस इंडस्ट्रीज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर यह लगभग 1.5% है और हमारे देश की जीडीपी में ये इंडस्ट्रीज मात्र 0.2% का कंट्रीब्यूशन करती है। इतना ही नहीं, 40% टूरिज्म सेक्टर का रेवेन्यू सीधे माइस इंडस्ट्री से आता है। वहीं रोजगार की बात करूं तो टूरिज्म में 8% से अधिक लोगों को माइस इंडस्ट्री से रोजगारी मिलती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अभी इस इंडस्ट्रीज में कितना बड़ा स्कोप है और हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब वर्ल्ड वाइड माइस डेस्टिनेशन के रूप में तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में दिल्ली में G20 के दौरान भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे वर्ल्ड क्लास माइस इंफ्रास्ट्रक्चर देश को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात ने भी स्वयं को माइस इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट चॉइस के रूप में स्थापित किया है। आज गुजरात में न केवल नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस और मेगा इवेंट्स आयोजित होते हैं, बल्कि हमने कई इंटरनेशनल इवेंट्स भी आयोजित किए हैं। माननीय मोदी जी ने गुजरात के महात्मा मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें सम्मेलन आयोजित किए हैं। G20 के कई इवेंट्स, 13 CMS CPO इवेंट, अफ्रीकन बैंक डेवलपमेंट इवेंट और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो गुजरात को माइस के लिए भारत में सबसे सूटेबल स्टेट बनाता है। आज गुजरात में माइस इंडस्ट्रीज से जुड़े कई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। गुजरात में एडवेंचर, मेडिकल, हेरिटेज टूरिज्म फला फूला है और अब कॉन्फ्रेंस टूरिज्म पर जोर दिया जा रहा है। G20 के 17 से अधिक मीटिंग्स के सफल आयोजन से गुजरात ने अपनी पर्यटन क्षमता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पिछले 20 साल से चल रहा वाइब्रेंट गुजरात समिट इवेंट भी अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि गुजरात बड़े से बड़े इवेंट का आयोजन सफलता से करना जानता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्वाध रूप में हमने कल ही टूरिज्म सेक्टर से जुड़े
15 एमओयू किए हैं जो राज्य के माइस इंडस्ट्रीज को नया बूस्ट देगा और आज भी इस दिशा में कुछ एमओयू किए गए हैं। पूरे विश्व अपने आयोजन के लिए भारत का रूप करे, इस विजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और गुजरात इसमें सर्वाधिक योगदान दे, इसके लिए हम भी प्रतिबद्ध के साथ काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं इंडिया कन्वेंशन प्रोग्राम ब्यूरो ICPB की भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने देश के पूरे माइस इंडस्ट्रीज को सही दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं हमारे टूरिज्म विभाग और TCGL को भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने इतने कम समय में इस इवेंट को सफल बनाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि आज यह 14 कन्वेंशनल इंडियन कॉन्क्लेव सस्टेनेबल माइस एम्पावरिंग इन इवेंट टूवर्ड्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विषय पर आयोजित हो रहा है। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसे हम सभी को साथ मिलकर पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को साकार करने में भारत और गुजरात की माइस इंडस्ट्रीज अपना श्रेष्ठ योगदान देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। MICE is a very important sector and there is huge potential of growth of the sector in India. As Amresh shared, we currently have less than 1% share in global MICE business. Despite our excellent infrastructure, knowledge capital, entrepreneurship and service delivery, India could we as part of our strategy been targeting 2%, but we certainly deserve more than 1% share in the global market. The recent India's G20 presidency, when we organized around 200 meetings across 60 cities in the country, including Tier 1, Tier 2 and Tier 3 cities, really established India's MICE position. It brought the confidence that we can organize international events across the country, across the small and big capital and other destinations. And this momentum must be maintained if we have to achieve the future growth of MICE sector in the country. The 14th Conventions India Conclave, which is being organized here, is an excellent opportunity for all stakeholders in Gujarat to showcase their products and services to the meeting planners and incentive operators who are here to experience Gujarat as MICE destination. The conclave will certainly pave the way for Gujarat to emerge and position itself as a premier MICE and leisure destination. The theme of this conclave is also very apt. The economic side of it, how MICE sector can contribute to the economy of the country, of the state, is without any, it doesn't require any detailed conviction. But the sustainability part of it is definitely a major challenge, and I hope ICPB, Ministry of Tourism and state government, we together take efforts to make the future MICE segment in India sustainable. When you talk about sustainability, it cuts across all activities that we do. It impacts the venue where we host our events. It impacts the transport that we use. It impacts the entire value chain. So all our stakeholders, all our activities have to be sustainable, and that's where the future is. In terms of Ministry of Tourism's initiative, we put together our thoughts in consultation with industry and states in terms of a national strategy for MICE tourism, which essentially talks about 6 things. The first is to provide institutional support to the MICE sector.
we are talking about, like ICPB does bring industry for supporting the sector in a big way. We are also proposing and advocating MICE bureaus at the city level. When a city has to really present itself for hosting events, it has to bring all public sector and private sector stakeholders together to position the city. And the city MICE bureau can do that role in the best possible way. So we are advocating city MICE bureaus should be set up across major cities in the country. The MICE also requires an ecosystem. It's not just one player. There are a whole lot of players who together make this segment, and we must make sure that there is a vibrant ecosystem in every MICE destination. Then only it will succeed. We also need to make sure that we are competitive when it comes to our offerings, and the competitiveness starts including the initial capital investment which goes into building the infrastructure, the facilities, and subsequently when we operate these facilities. Most of the states have offered hotels, convention center, the industry status, which has brought some operational expenses, the reduction in operational expenses. We're also trying to give infrastructure status to the convention centers, to the MICE facilities and hotels. That should ease the initial capital investment into the sector. The ease of doing business, you have to interface with multiple things when you are organizing conference, right from getting the visa to the traveling to the right place and many other touch points. We must make sure that we are easy to do business. Organizing MICE conference in the state or anywhere else is very easy. It doesn't cause any hassles. Marketing and promotion. So like Amresh talked about 2 years back, we had launched this Meet in India brand. The whole objective was MICE sits at the cross section of business and tourism. It's not alone. It's not tourism alone. So how do you position this distinctly? How you tell the world that yes, we are a MICE destination. We recognize this as an independent segment. That's where our effort in the ministry, and we are working with industry to give it a very separate recognition. It has its own dynamics and nuances, and we work towards developing that. So Meet in India, we've launched a social media campaign. We are trying to put together a dedicated microsite for MICE in India, the Meet in India, to bring together all facilities, the planners that we have. At least the world should know what all we have, and that will really give us an edge. MICE industry was estimated to be upward of $800 billion globally, or 57 lakh crores in rupee terms. India's share was estimated to be just around less than 1%, to be precise 0.67%, or around 50,000 crore. MICE sector is believed to have the strongest and the direct contribution to the GDP than there any other tourism sector. Each 100 rupees spent in India could have an indirect impact of another 160 rupees. Just in MICE sector, economic output globally was estimated to be above $1 trillion or more, that is around 78 lakh crores. Thus, together between all our states and the center, we must double our MICE share to 2.5% of the world share. We must target more than 1 lakh crore direct economic and 1.6 lakh crore indirect benefit to all our states. As of now, we had one city in the top 100 rank as per the ICA. Our goal must be to having minimum 10 cities in the top 100 and at least 1 or 2 cities in the top 10. To that, we must together work between central and state government, benchmark our MICE infrastructure of our local Indian cities to the top global MICE cities. We need to recognize MICE tourism as a distinct business and industry segment. Based upon our years of recommendation to the government, has already created a sub-brand, Meet in India. To the main brand, Incredible India, we are thankful to the central government for taking MICE, and recently Government of India has created mission document and had the vision document on this 30th, where the brainstorming session was done. MICE is now on a mission mode. We are dedicated market development assistance to the MICE operators for targeted global markets.
Additionally, together between all states and center, we must target global conferences, conventions, and social events not just for private sector but also for the government and multilateral sectors. Together between all state and center, we must create a joint global MICE bidding fund with a corpus of around 5,000 crores to enable our MICE entrepreneurs undertake techno-economic bids for events which have a bid cycle of 2 to 4 years. Each of our states needs to create city convention bureaus in each of our main cities, which will work with the ICPB as their hub to carry out the global bidding activities. Formal skilling found for developing MICE, talent and graduates need to be built up. State Convention Bureaus chapter with affiliation and coordination with the ICPB. Site inspection, the farm trip support, especially for the MICE industry, can be done, and Government of India is very happy to start doing this thing along with the state governments. We need to more and more Indian companies undertake their MICE activities in our own Indian states. However, that is only possible if we enable IGST for our hotels, which will complete the end-to-end GST chain, and enterprises get GST set off. Of our special tourism zone, we should create a MICE zone recently in the Dwarka, where around 5,700 crores has been spent to build the India International Convention Center known as Yasobhubi, which is having actually total the MICE zone with lots of hotel, metro connectivity, convention centers. Similarly, like here you have the hotel, convention centers, all are coming in the same zones. So we need to build more and more this kind of facilities. The world is changing very fast. Business today recognizes the disruptive forces of globalization, urbanization, scarcity of natural resources. Faced with an uncertain business landscape, many companies are already planning their part and taking responsible action for sustainable development. Sustainable development growth not only provide a pathways for sustainable development, but also provide an opportunity to renew and integrate efforts with a view to meet a significant degree of local, regional, national and global aspiration in a defined time frame. The World Economic Forum sprang a happy surprise with its prediction that the Indian economy will become the third largest in the world by the year 2030, only behind the US and China. This economic parameters prevailing in the country is helping India to emerge a big market for MICE industry, and players in MICE segments have geared up to realize the potential these sectors offer. MICE industry is considered to be a major component making Business Travel and Tourism Global Business Travel Association GBTA, which revealed India's annual growth in business travel at 11.4%, the largest rise among the top 15 business travel markets globally. According to a report by KPMG, India is now a $30 billion business travel market and expected to more than triple to $93 billion by 2030. The Ministry of Tourism has signaled its intent to launch a campaign promoting India as a MICE destination on the global market, generating by India's G20 presidency. The effectiveness of the marketing effort, industry involvement and long-term implication is now the need of the hour. Our topic for the today's sessions is इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई, उसमें विदेश से आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उसमें गुजरात इंडिया की फर्स्ट चॉइस बना है। फॉरेन ट्रैवल टूरिस्ट में गुजरात इज नाउ द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री। ऑल्सो वी आर इन द टॉप 5 एज फार एज द डोमेस्टिक टूरिज्म इज कंसर्न। देश के अंदर भी जो प्रवासी हैं उनकी आने की संख्या में भी गुजरात पहले 5 राज्यों में स्थान बन चुका है। इसके अलावा थोड़े समय पहले ही UNWTO का प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी हमें दोरडो विलेज के लिए मिला है।
इसके बाद भी हम बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और ख़ास करके गुजरात में अभी आइकॉनिक डेस्टिनेशंस और स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए हम और नए प्रोजेक्ट्स पे मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करना बहुत ही सम्मान की बात है जो पर्यटन और व्यवसाय दोनों ही में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हुआ है। गुजरात अपनी सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत वास्तुकला, अनोखे परिदृश्य के साथ हमेशा ही विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। आज मैं बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों यानी कि माइस से लगते राज्य में जो भी प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हुए बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में गुजरात ने कई अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्रामों की मेजबानी करी है। G20 में जो भारत में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या का प्रोग्राम हमें गुजरात में आयोजित किया। गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका 10वां एडिशन अभी जनवरी में होने जा रहा है, वो हम लोग पिछले 20 साल से हर 2 साल में आयोजित करते रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो और कुछ ही समय पहले वर्ल्ड कप फाइनल, IPL और काफ़ी सारे इवेंट्स हमने यहाँ गुजरात में होस्ट किए हैं। तो अब हमारा फोकस माइस पे भी काफ़ी ज़्यादा है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात काफ़ी सारे क्षेत्रों में अग्रिम राज्य रहा है और अग्रिम राज्य बनने की पूरी कोशिश हर क्षेत्र में करता है। उसी तरह इस सेक्टर में भी, माइस सेक्टर में भी गुजरात सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ऊपर माइस सेक्टर में भी अग्रिम राज्य बने। गुजरात भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुत ही लकी है कि बहुत सारी कल्चरल और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, बीचेस, बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस, यूनेस्को वर्ल्ड साइट, ब्लू फ्लैग बीच, सब कुछ गुजरात में है। पर कुछ चीज़ों में जहां गुजरात सबसे अलग है, पिछले कुछ वर्षों में गुजरात नए इवेंट्स और नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करने में खूब सफल रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल महात्मा मंदिर है। दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी मैं बात करना चाहता हूं, जहां पे एक अलग सी जगह पे, जहां पे पहले टूरिज्म का कोई भी पोटेंशियल नहीं था या यहाँ टूरिज्म का कोई भी विकास नहीं हुआ था, वहाँ पे स्टैच्यू और उसके आसपास जो पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, उसकी वजह से इट कैन बी सेड टू बी अ फर्स्ट फिल मेगा साइज टूरिज्म डेस्टिनेशन क्रिएटेड इन इंडिया। इसी तरीके से कच्छ का रण, वहाँ पे भी जो इवेंट क्रिएट हुआ है और जो अब टूरिज्म का वहाँ पे विकास हुआ है, बहुत सालों पहले मैंने वहाँ पे काम किया और अब इतने सालों के बाद जब हम वहाँ वापस जाते हैं, वी रियली फील प्राउड कि टूरिज्म की वजह से रण ऑफ कच्छ का खूब विकास हुआ है। Gujarat has been very successful in creating new events and new destinations, and we are continuing with that effort. In fact, yesterday again was a very lucky day for us when we got a good news that UNESCO has declared Navratri as tangible asset, and now Navratri festival, which has now become very famous in India. Navratri जो पहले से काफ़ी पूरे भारत में, देश में अलग अलग जगह बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, 9 दिन तक का। इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल। अब उसको हम अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पे भी ले जाने का प्रयास करेंगे। गुजरात इसी तरीके से नए नए डेस्टिनेशंस और इवेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करता रहेगा। महात्मा मंदिर में हमने पिछले कुछ सालों में 425 से ज़्यादा प्रोग्राम करे। लीला में पिछले 1 साल में 625 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए हैं। इसी तरह केवड़िया में पिछले 1 साल में बड़े 12 इवेंट्स हम लोग के द्वारा आयोजित किए गए हैं। रण ऑफ कच्छ में भी इंटरनेशनल लेवल के कई सारे इवेंट्स आयोजित किए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में ही साइंस सिटी, बड़ौदा, सूरत में और अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया, ये काफ़ी सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे बड़े कन्वेंशंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस हो सकते हैं। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि इन डेस्टिनेशंस को हम प्रमोट करें और जो मीट इन इंडिया ब्रांड की शुरुआत की गई है उस पे फोकस करके विश्व के सारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो भारत में आए और भारत में भी विशेष रूप से गुजरात में आए। इसके लिए हम खूब प्रयास करेंगे। You are watching Travel World Online.